आज का पहला मुद्दा इकोनॉमिक सिचुएशन एंड डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी है। मैं विपक्ष के नेता से दरख्वास्त करूंगी कि अपनी कार्यवाही शुरू करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से रूलिंग पार्टी तक अपनी बात पहुंचाना चाहती हूं। The GDP growth rate in this year has been just 5%, which is the lowest in this last decade. शर्म आती है मुझे कहते हुए कि 5% GDP growth rate है। Any sensible government would realize what we bad invest. But हमारी महान government, they are providing subsidies and even more subsidies. गवर्नमेंट हमसे ही पैसा लेके हमको ही वापस दे रही है। कान ऐसे पकड़े या वैसे, बात तो एक ही है। हम नहीं चाहते कि गवर्नमेंट कहे ले लो, हम चाहते हैं गवर्नमेंट गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ताकि हम हक से ले लें। दूसरी बात ये कि सब्सिडीज आर नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर विच डज नॉट हेल्प इन एनी वे टू फर्दर द इकोनॉमिक ग्रोथ. So we need investment in the manufacturing sector. Why? Because its growth rate is just 2.6%. It clearly shows this 6% how bad investment in this sector. The unemployment rate has decreased. Sorry, it has increased. Where it should decrease, it has increased by 1%. And the number of unemployed youth are 10.8 million. मैं सबको बता दूं कि ये पूरी क्यूबा और ग्रीस जैसी कंट्रीज की तो पूरी की पूरी जनसंख्या है। हमें इतना पोटेंशियल है कि हम लोग पूरी दुनिया को हिला के रख सकते हैं, बट यहाँ पे दुनिया हमें हिला रही है। सीपीआई इंडेक्स इन्फ्लेशन की बात करती हूँ is 10.85%, indicating double digit inflation. I am asking the government, it is a warning bell. Rise, wake up, why are you sleeping? Tell me how is the poor man going to live? दूसरा मुद्दा ये है कि अगर ये डीजल प्राइसेस की वजह से बढ़ रही है इन्फ्लेशन, तो क्यों नहीं हम ब्राजील की तरह 15 to 20% अल्कोहल यूज कर रहे हैं पेट्रोल के साथ? क्यों नहीं हम चाइना और जापान की तरह इलेक्ट्रिकल बाइसाइकिल्स और मोटरसाइकिल्स प्रमोट करें? दूसरा मुद्दा बजट का, इट इज ऑलरेडी टू मच फॉर अस, पर हमारी गवर्नमेंट महान फूड सिक्योरिटी बिल लेके आए हैं। इट इज गोइंग टू इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बाय $24 billion, such a huge amount, and the public distribution system which is going to be used for this reportedly has 51% leakage. मैं पूछती हूँ, एक ऐसा सिस्टम जिसके हाथ पांव खुद ही नहीं है, क्या वो पूरी भारत की जनता को अपने कंधे पे उठा सकती है? हम सब ने देखा है न्यूज चैनल्स पर किस तरह से अनाज सड़ रहा होता है। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगी, जो नहीं बचा सके अनाज को, क्या वो बचाएंगे समाज को? जैसा कि मैंने कहा था, हमारी गवर्नमेंट तो महान है। वो कहती है अगर आप 33 रुपए एक दिन में खर्च करते हो तो आप गरीब नहीं हो। मैं कहती हूँ यूनिक टैलेंट मुझ में तो नहीं है। 33 रुपए एक दिन में मैं फूड, मेडिकल, हेल्थ, एजुकेशन और रेंट एक्सपेंसेस पे कर दूं। मुझे लगता है अगर आप गवर्नमेंट से पूछेंगे कि आपको 60 रुपए में आप क्या कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट कहेगी 60 रुपए, उसमें तो इंसान एसी के कमरों में रह सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है? तो हुआ है ग्रोथ रेट नीचे गया है, अनएम्प्लॉयमेंट गया है, पॉवर्टी ऊपर गई है, इन्फ्लेशन करप्शन और भी ऊपर गया है। एक और चीज, जो S&P है उसने हमारी क्रेडिट रेटिंग BBB पॉजिटिव से BBB नेगेटिव कर दी है। वॉलमार्ट और पोस्को जैसी कंपनीज को हमें कॉन्फिडेंस नहीं है। इतना इनएफिशिएंसी क्यों है इंडिया में? लास्ट थिंग मैं जो कहना चाहूंगी, हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं माइंड बॉडी एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है, क्या करें? तो डॉक्टर हमें कहता है यू नीड रेस्ट, टेक सम वेकेशन। आई वांट टू टेल द गवर्नमेंट you need rest, take some vacation, take a long vacation, you badly need it. Thank you. Mr. Faiz Lodia. Honorable Speaker, I would like firstly to state that the global economic environment is greatly responsible for the current economic downfall of the country.
the Eurozone crisis being predominant. However, we do not disagree that domestic policy shall not be blamed for the economic downfall, and also we are making consistent efforts to fix things and help rupee get back its value. The prime reason for depreciation is current account deficit. The dollar inflow is less than dollar outflow. There are various measures taken by the government, of which curtailing gold import is a prime priority. We are looking to curb gold import around 800 tons this year by raising import duty on the yellow metal, which is expected to lower import by a huge $4 billion, helping us to lower current account deficit and thus help us rupee getting its value. With a country like ours, it is clearly understandable that demand of gold will always be high by the virtue of culture we practice. It is simply amazing that there are no authentic estimates for distribution. However, Reserve Bank of India document indicates that 80% of gold distribution is for fabricated jewellery, 15% is for investor demand. I would like to highlight RBI has given that these policies are not working. Going on records. It may be reasonable to conclude that treating this gigantic volume of gold as merely fabricated jewellery, this allows center to evaluate assets, and thus the impact on rupee is negative in nature. The gold bond bank policy, where bond against gold be issued, will allow RBI to regulate evaluation process, and this will help rupee start breathing better without any adverse impact on the common man. Oil. After gold, India is the largest importer of crude oil, driven by its demand. The center is looking to cut back on oil as well and is finding every possible way that we import oil directly from Iran. Also, the RBI governor-led decision to pay off all the oil companies directly in dollars has helped rupee get 2 points against dollar, and we are looking forward to continue as oil contributes 90% of $10 billion deficit, and we hope rupee will get back soon better. Thank you. Thank you, Mr. Neen Singapuri. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मेरी बात रखने का इस अंतर में मौका दिया। सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में Miss Mamta Singh. Honorable Speaker and members of the Parliament present here. Today, I want to say to the opposition parties, first be clear with the concept that what is the concept. We are not getting that don't use Facebook, we are just having the topic that just we have to use it, limit, that's it. And you are saying that government is doing nothing. What government is doing nothing? Now listen what government is doing. It has also played a very important role in crime solving. Recently, police departments of New York Police Department are beginning to investigate gang rape related crimes on social media networks. Recently, New York Police Department snapped 60 gang members who posted about violent criming activity in social media. And opposition party said that 14,000 are the followers of social media, then 5,000 are committing suicide during that. And if learning will be on only websites, then what about the university and schools? We should also not be here. Then WhatsApp, Twitter are good, but that should be in limit. And we are not the breaking chains. The opposition party candidate said we are breaking the chains. We are not breaking the chains. We are just saying use in limit. ज्यादा नमक तो खाने को भी जहर बना देता है, और यही चीज हमारे जहर हमारे यूथ में भी, हमारी सोसाइटी में फेसबुक एक जहर की तरह फैल जाएगा अगर उसका लिमिट में यूज नहीं किया जाए। थैंक यू ऑनरेबल मेंबर मिस्टर इरफान खटकी। शुक्रिया अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए विरोधी पक्ष के सामने ये मुद्दा रखना चाहता हूँ कि हमें सोशल मीडिया में आरटीआई लाया है। आप बोल रहे हो कि देश की इंफॉर्मेशन हमें मिलती नहीं है, लेकिन आप में से कितने लोग आरटीआई का उपयोग करते हो? आपको तो फेसबुक और ट्विटर के अलावा कुछ दिखता नहीं है, और सोशल मीडिया पे देश की सारी जानकारी रखना ये तो नामुमकिन ही है। जैसे कि न्यूक्लियर डील, आर्म सिस्टम, इससे हमारे देश की सुरक्षा में सेंध लग सकती है। अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सोशल मीडिया के जरिए साइबर क्राइम भी बहुत बढ़ावा मिला है। दूसरे देश हमारे देश के युवाओं को कमजोर करना चाहते हैं, वो खुद तो यहाँ पर आ नहीं सकते, इसलिए वो सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। वो झूठे एमएमएस बनाकर बिन सांप्रदायिक देश के अंदर सांप्रदायिकता का फैलाव कर रहे हैं।
और रही बात एजुकेशन की, हमारे विरोधी पक्ष ने सांसद ने हमें बताया कि एजुकेशन क्या सिर्फ सोशल मीडिया के द्वारा ही मिलता है, स्कूल या कॉलेज में जाने से नहीं मिल पाएगा। सोशल मीडिया के थ्रू चीटिंग केस ज्यादा हो रहे हैं। सोशल मीडिया का मिस यूज की वजह से कितने लड़कों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हुई है। वो लव मैरिज करते हैं, लेकिन कितने सारे लव मैरिज अनसक्सेसफुल हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के अंदर पहले सोशल मीडिया नहीं था तो क्या हमें स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा गांधी जी जैसे तत्वचिंतक नहीं मिले थे? मैं सोशल मीडिया पर विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन उस पर कुछ नियंत्रण आना चाहिए, इस बात का मैं प्रस्ताव रख रहा हूँ। थैंक यू। Thank you, Honorable Member. May I now request the Honorable Minister from Government to present his stand. Honorable Madam Speaker and my fellow parliamentarians, the Government of India might be a slow adopter of social media, but it is certainly making up for it now. The Prime Minister is on the social networking site Facebook, and that is frequently updated with political and personal updates. It has received a great response, 411 lakh likes, which shows that the citizens are actually interested in engaging in political and policy discourses. The PMO maintains it, and all information regarding important bills, legislations, PM statements, press releases, official visits and photographs are all regularly uploaded. PMO India has a Twitter handle too. We have several pages for various programs and policies like Narendra, National Rural Health Mission, even the Census Department. All these pages are updated with new data sets, and their highlights are all uploaded with links to their websites. It is a two-way communication between the respective government and the people. In an attempt to make planning process more participative as well as inclusive and to change its old image, Planning Commission debuted on Facebook with the 12th five-year plan. Everyone from industry associations, NGOs and common man can post suggestions on these platforms. The Commission has also started making extensive use of social media platforms like Facebook, Twitter, YouTube, SlideShare, Flickr and Google+. A hackathon for the 12th plan was launched in April 2013. The event held across the country was a first of its kind by any government body, which involved students, youngsters and others in preparing infotainment, storyboards, mobile apps, etc. The Deputy Chairman of the Planning Commission also held a live Google Plus Hangout session on the occasion of the 63rd anniversary of the Planning Commission. A similar session was held by Sam Pitroda on Twitter. The model agency for dissemination of information on Government of India, the Press Information Bureau, has its own Twitter handle too. To help government organizations engage more fruitfully with stakeholders using the social media platform, the Department of IT has drafted a document titled Framework and Guidelines for Use of Social Media by Government Organizations. Thus, I believe we have made sufficient efforts to involve people in governance online. We are using social media, not overusing it. Thank you. Thank you, Honorable Minister. Social media has its own pros and cons. But looking at the positive side of the social media that the opposition party has suggested, we further suggest the future government to make optimum use of the social media, thus making our governance stronger and more effective. This House is adjourned. हेलो, हम इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर है।